and welcome to this weekly SARAS meeting. And this meeting is where we practice and we try to apply our knowledge that we have gained while learning astrology. Right? It could be SALSA method of astrology, or it could be Vedic method, or it could be KP method, or it could be any method that you think you are good at, or you think which relates with you the most. Right? You can apply that. And the idea is we have to study a chart so that we get more insights about the chart, about the person, right? Whoever's chart we are studying. And the interesting thing here is I do not tell you the name of the person whose chart we are studying, right? नहीं तो क्या होगा? We will all start giving biased comments and biased predictions, right? So, it is better to, apply our logic, our intuition, and try to understand about the chart rather than just going on, and judging who the name of the person is and all of that. I will tell you the name of the chart person at the end of the today's session. So later on, you can make the connections whichever you want to, right? So this is the very interesting thing that we do for this particular practice, right? And typically, service meeting is arranged every week, right? Sometimes it is in the morning, sometimes it is at this time. So currently it is at this time. Okay. Okay. So let me share the chart with you, which I had shared already with you in the WhatsApp community, and I'm going to give you some questions that you can discuss upon on this chart. All right. Now, what I'm going to do is, after I discuss some details about the chart with you, I'm going to ask you to go into a breakout room. And in the breakout room, okay, the questions that I'm going to give. All right. So let me share the chart with you. Okay. So I've shared the Lagna chart and I've shared the table also. Okay. So these are the charts, right? So if you check the Lagna Kundali, right, in the Lagna, we have the sixth Rashi that is coming in the first house, right? That means Virgo is there in the first house, and the degree is 20 degrees or 21 degrees. Okay. So it is slightly, the Lagna is slightly in transition, but not too much in transition. It is slightly in transition. Okay, then we have Ketu in the first house, right? 16 degrees. Then second house, there is no planet. Third house, there is no planet directly sitting. Fourth house, we have Saturn, right? And Saturn is 27 degrees. That means what? Saturn is having an effect on the fourth also and the fifth also, according to our SALSA method of astrology. Then we have sixth house is empty, 11th Rashi is there, and 12th Rashi is there in the seventh house. Okay? And there we have Rahu and Uranus, right? If you check Rahu's degree, it is 16 degrees. Uranus, 26 degrees, right? So Rahu and Uranus both come in conjunction also, right? And by the way, Ketu and your me planet or the Lagna, right? That is also in conjunction, right? So many times so far we have seen Rahu Neptune combinations. This is a chart where we are seeing Rahu Uranus conjunction, and Uranus is also having an impact on the eighth house, right? Uranus is also having an impact on the eighth house. Now, eighth house directly there is no planet sitting, but Uranus is impacting, as we have already seen. That is an interesting thing. Then Moon is there in the ninth house. Correct? Now Moon's degree is how much? Moon's degree is 2 degrees. So this is another indication that Moon is also impacting the eighth house. Right? So eighth and ninth.
right? That is where the moon is having an impact, partial impact on both the houses. फिर उसके बाद in the 10th house we have 3 planets. Pluto is there, 27 degrees. So that means what? Pluto is having an impact on the 10th house also and the 11th house also. Sun is there, 25 degrees. Again the same thing, 10th house also and 11th house also. And Venus is 9 degrees. Correct? So Venus is like a little bit, very little bit in the 9th house, and mostly it is there in the 10th house. Okay. Then we have Mercury and Jupiter in the 11th house. Okay, so Mercury 7 degrees. So again 10,000 11th house. And Jupiter is 5 degrees, again 10,000 11th house. Right? So somehow you get a feeling 10,000 11th house, have a lot of, impact that is there, of the planets, right? Lot of concentration of energies is happening in these two houses, right? Is what we can sense here. Fifth Rashi is there in the 12th house, and the 12th house has Mars in it. Mars is 24 degrees. So Mars is having an impact on the first house also, and Mars is also having an impact on the 12th house. And Neptune is there in 10 degrees or 11 degrees, you can say. So Neptune is having an impact in the 12th house. All right. Okay, excellent. So this is the entire chart that we are going to study today. I am not going to tell you the name of this person as of now, but I am going to give you a few questions, right? So please go ahead and write the first question, right? How does this person might be looking? Okay. What could be the facial features of the person? Okay. And not only facial, you can also have kind of discuss on, the overall body posture of this person. Okay. That is a new question that we have introduced this time. Right. So how will you check this out? You look at the first house, right? So that will give a good idea about the head, the face, right? The upper area of the body. And then, you have every body part in every house, no? Right. So by doing that, overall, you can have a fair idea of how this person might be looking. Okay. Second is, of course, profession of this person. Right. You can check it out. Okay. So, what is the profession of this person? Third question is, where did the money come from? What could be the income sources of this person? Right? तो प्रोफेशन के लिए आप क्या क्या चेक करोगे? Firstly, obviously, the first house will have an impact on the profession. The me planet will have an impact on the profession, right? Then you can look for natural strengths. That is, Neptune is there, which tells you a lot about natural strengths. Or you can see some concentration of, very dynamic energies coming together in some other house or anything like that, right? Then you can check the 10th house also, right? That is where the person is investing a lot of energies, right? And find a combination of all of these things, right? So profession is not never like, this house means यही profession होगा या ऐसा कुछ भी नहीं, right? Income sources के लिए what you can do is, again, first house will have an impact on income source also, but you have to check second house, sixth house, and the 10th house for the income sources. Then you can add a little bit of analysis from the 11th house also, right? Because 11th house is sudden income, sudden gains, right? Multiple sources of income. That is what the 11th house is about. Second, sixth, and 10th are the Artha houses. Correct? So check out income sources. Then can you check for network of this person? इनका प्रोफेशनल नेटवर्क में कौन से लोग might be involved,
ठीक है? Can you check for network of this person? All right. Then where did he or she conduct his profession? Was it only in his own country, or did this person become famous all over the world? Right? What happened? Right? Yeah. So these are the questions we can discuss upon. Right? And once you go into the breakout room, प्लीज डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग कि मुझे तो ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, राइट? ये नाम हो सकता है, इसका हो सकता है, उसका हो सकता है, शाहरुख खान हो सकता है, माइकल जैक्सन हो सकता है, राइट? वॉट एवर इट इज, डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स, राइट? डोंट गेट इनटू जेंडर ऑल्सो, ठीक है? कि ये ही है या शी है, राइट? डोंट गेट इनटू जेंडर ऑल्सो, ठीक है? जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है? आप बोलने के लिए बोल सकते हो, यू कैन कंटिन्यू विद वॉट एवर जेंडर यू फील लाइक, राइट? बट that also doesn't matter. All right. Okay. Any questions before we go into the breakout room? Okay. So I'm going to create the breakout rooms. Okay. And I hope everybody is in a position to participate in the breakout room. Yes. Right. Everybody is in a position. Everybody is going to speak. Everybody is going to talk. Yes. Yes, sir. Okay, excellent. I'm going to create only 2 breakout rooms, so you will have either 8 or 9 participants, right? And make sure everybody gets a chance to speak. Make sure it is nice and disciplined, right? Do not interrupt anybody, but at the same time, do not take up all the entire time also, right? Just handle it really well, okay? And we are going to go into breakout room for 30 minutes, okay? And once you come back from the breakout room, right, we will have a discussion on these questions, right? And I will also try to add my insights into this chart. And once I do that, I think then we will close the session, all right? Okay. So we'll summarize the learnings and then we'll close the session, all right? Okay. And let's go. Okay, go ahead, click on that link. Click on the breakout room wala button you must have received. Anita ji, no worries. Just go into the breakout room and just enjoy the discussion, okay? The more you hear things, the more, it goes into you, the more you'll start getting ideas, no? Just go ahead and join, right? Then it's hard work. Hello. Yes. Hard work. Hard work, okay. Righteous way. Okay. Something related emotionally also. मून से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, इनका पर्ल का हो कुछ। हाँ, थोड़ा इमोशनल Emotional. हाँ, That's what. और इंटेलिजेंस मतलब वाइज भी हो सकता है। वाइज है क्योंकि जुपिटर है। हाँ, और हार्ड वर्क है और राइटियस वे में है, सैटर्न है, Righteous. डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन हाँ। है उसमें, मतलब कोई गलत ऐसे वो नहीं है, मतलब अपनी मेहनत से ही होगा जो भी होगा इनका। और थर्ड हाउस में देखेंगे तो राहु और फिर का एस्पेक्ट है, मून का पार्शियल एस्पेक्ट है, जुपिटर का वीनस का पार्शियल है और एस्पेक्ट मार्स है, का है। मार्स का वीनस है। मार्स, हाँ, कम्युनिकेशन वाला जो है इनका, उसमें भी वीनस भी है सर, उसमें मून भी है। तो वीनस कहाँ पे है? वीनस का एस्पेक्ट है ना सर। थर्ड हाउस में वीनस का कहाँ से आ रहा है? फोर्थ हाउस में आ रहा है। हाँ। वीनस सर इनका पार्शियली उसमें भी है ना, इनका 9th हाउस में, हाँ तो उसका एस्पेक्ट थर्ड में होगा ना सर, हाँ ठीक है। हाँ, वीनस का। करेक्ट। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, सॉरी। तो बिजनेस इनका जैसे सैटर्न से रिलेटेड हो सकता है, मून से रिलेटेड, क्योंकि वो उनके धन वाले उसमें भी हैं और इसमें भी कम्युनिकेशन वाले में भी हैं, 10th हाउस में भी इफेक्ट है उनका। हाँ कोई ये लेखक भी हो सकता है प्रोफेशन में, ही माइट हैव रिटन बुक्स आल्सो। कम्युनिकेशन, हाँ, इसमें फोर्थ हाउस में अभी सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है 27 डिग्रीज, और प्लैनेट्स उधर बैठे हैं, मार्स, सन, वीनस, प्लूटो। प्लूटो। मतलब जो बड़ी जो शादीशुदा जिंदगी रही हो वो बड़ी ऐसे मारा मारी वाली भी रही हो सकती है, मार्स बड़ी एंग्री काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो खैर वो तो सर का क्वेश्चन नहीं था, वो यूरानस, तो बाय राहु, चांस मार्स सब एग्रेसिव प्लैनेट्स हो गए हो। एग्रेसिव प्लैनेट्स है। अब इनका जो प्रोफेशन में हमें दो चीजें तो पता चली कि एक तो हाँ। कोई अच्छी कम्युनिकेटिव वो कम्युनिकेशन वाली इनकी वो है job। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई, क्योंकि सन है वहां पे, इसलिए हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज हो हम इसको सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कह सकते हैं, और हम हाँ, कह सकते हैं कि हम्म ही कुड हैव गेन हाई हाई फेम। या हम्म ये खुद बहुत बड़े पोजीशन में हो सकते हैं, सन का ये भी हाँ हो हाँ, सकता वही है। किसी काफी हाई बड़ी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हाँ, ही तो इसका सन मतलब ये हो गया होता है। कि इंडिया मतलब अपनी कंट्री एज वेल एज अदर कंट्री में भी हाँ, फेमस क्योंकि नेपच्यून है, अगर फॉरेन वाले उसमें नेपच्यून बैठा हुआ है तो वो नेपच्यून तो वो नेचुरल करवाए लाइबिलिटी उनको। हाँ, फॉरेन ट्रैवल्स तो बहुत दी ही होंगी उन्होंने। नेचुरली वुड हैव बीन इंक्लाइंड टू, हाँ हाँ बट देन इनका 10th हाउस में प्लूटो भी है, यू शुड इनकॉर्पोरेट उसका वैल्यू भी हाँ, कुछ यहाँ पे। प्लूटो जो है हाँ, वो इवन उसमें भी तो उसका पार्शल है। पार्शियल है, हाँ। हाँ, पार्शियल है। मैक्सिमम 11th में, बट देन है सिटिंग ऑन 10th। सिटिंग इन 10th है। तो मतलब उनकी आय के सोर्सेज जो हैं वो अगर हम देखते हैं 11th में देखते हैं तो उसमें प्लूटो का कोई रोल हो सकता है कि ही मे हैव मल्टीपल सोर्सेज प्रोबेबली, या नया नया। मतलब एकदम से कोई वो हो करके हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हाँ, हो करके, सडनली। जैसे सडनली, या तो हो सकता है कि गरीबी में से उस पे आए उठ के आए हैं। मतलब, हाँ, हाँ, इवन उठ के दैट आए इज पॉसिबल। yes, हाँ, that can प्रोबेबली he may not be, he may not And, have been born with money, but इंटेलिजेंट, काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। तो क्योंकि इनका मर्क्यूरी है, इनका 10th हाउस में जुपिटर, मरकरी और जुपिटर दोनों का हाँ हाँ पार्शल आ रहे हैं ये, तो हाँ, इसका मतलब हाईली इंटेलिजेंट, लॉजिकल भी हैं काफी ज्यादा, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मरकरी जो है यहाँ पर अपने हाउस में, अपनी राशि में दिखाई दे रहा है हमें। अब अगर इनके हम इनकम सोर्सेज देखते हैं तो जो अर्था हाउसेज इनकम हैं, सोर्सेज बीच से इनका ज्यादा हो सकता है, सब जगह मर्करी का प्रेजेंस नहीं, मर्क्यूरी सेकंड में हाउस से तो कोई भी लेना है, देना 10th नहीं, में भी है, सेकंड हाउस से कोई लेना देना नहीं है, 11th में भी मर्करी प्रेजेंट है। 6th में भी कोई मर्क्यूरी का लेना देना नहीं है। उसमें मार्स एंड नेपच्यून का इनकम, इम्पैक्ट आ रहा है आपका 6 में। मार्स एंड नेपच्यून का एस्पेक्ट आ रहा है 6 में। 6th में, हाँ, मार्स और नेपच्यून का आ रहा है। 6 में मार्स और किसका आ रहा है? हाँ, नेपच्यून का एस्पेक्ट भी आ रहा है, जुपिटर, पर सैटर्न, मार्स का पार्शल एस्पेक्ट है, पार्शियल, हाँ पार्शियल। मार्स का, जुपिटर का, सैटर्न और का, सबका सैटर्न का पार्शियल। भी एस्पेक्ट है उसमें। यस यस, सैटर्न का भी एस्पेक्ट उसमें, थर्ड सैटर्न पार्शियल। जुपिटर सबका ही है।
काफी है। कुछ प्रोबेबली टीचिंग से भी इनका काम हुआ, क्योंकि जुपिटर है, पार्शियल एस्पेक्ट है जुपिटर का 6th हाउस में, और इवन Teaching, सेकंड हाउस में preaching, भी, सेकंड हाउस में भी जुपिटर का पार्शियल एस्पेक्ट है। 11th हाउस में भी, 10th हाउस में भी जुपिटर का है, 11th में तो जुपिटर बैठा ही है। बैठा ही है। टीचिंग से तो कुछ रिलेशन इनका पक्का होना चाहिए। हाँ, टीचिंग से जुपिटर पैसा पार्शियल कमाया है हो। 10th में, हाँ, तो हाँ, 10th में ज्यादा है, बल्कि उसमें तो 4 या 5 हाँ, डिग्री होगा। हाँ 5 हाँ, डिग्री 10th में है। टीचिंग हाँ, और प्रीचिंग, टीचिंग प्रीचिंग टाइप्स है। हाँ, टीचिंग तो है ही है, मतलब पैसा कमाने में टीचिंग का एक हाथ तो रहा ही होगा जरूर, 100%। और प्लस उनका 9th हाउस में मून है, तो ही मस्ट हैव बीन वेरी सॉफ्ट स्पोकन हाँ, टाइप्स, सॉफ्ट स्पोकन टाइप, स्पिरिचुअल टाइप, स्पिरिचुअल टाइप्स, और डायनामिक एंड इनका इनका एक जो गुरु होगा वो भी ऐसा ही होना चाहिए, ठंडा, स्पिरिचुअल, एकदम कूल, मदरली, फील्ड में लेके गया होगा, नर्चरिंग। हाँ, और उनका कृत्तिका नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से भी इनकी ना पेनिट्रेटिंग आईज होगी और बॉडी पोस्चर अच्छा होगा। इवन तो हो सकता है जुपिटर का इम्पैक्ट हो, जैसा आप लोगों ने बोला, हेवी, थोड़ा बॉडी लेकिन हेवी, थोड़ी हेवी हो हाँ सकती है। टॉल होंगे, नेक हेवी होगा, आई सिंपैथेटिक, काम एक्सप्रेशन। टॉल कहाँ से आया, आपने कहाँ से टॉल देखा? कृत्तिका नक्षत्र से आया। अच्छा, टॉल कृतिका नक्षत्र से, ओके। आई सिंपैथेटिक कृत्तिका नक्षत्र से आया। नेक हेवी हो सकता है बिकॉज ऑफ द जुपिटर इम्पैक्ट, क्योंकि वो शायद नेक से बोलते होंगे, करते होंगे, तो समहाउ नेक और ये मिडिल पोर्शन उनका हेवी हो सकता है, बट आईज उनकी पेनिट्रेटिंग एंड काम। Eighth house. 8th house. Yes. Yes, Dr. Sapna, you're saying something. हाँ, और सर सोर्स ऑफ इनकम को इनका रिलीजियस वो भी हो सकता है, जैसे कुछ रिलीजियस इनका अपना कल्ट हो, जैसे क्योंकि वो 2nd में भी जुपिटर है, 6th में भी इफेक्ट है एंड 10th में भी जुपिटर का इफेक्ट है। हाँ, तो इनका रिलीजियस कल्ट हो, उसी से इनका जैसे सोर्स ऑफ इनकम में वो भी हो सकता है इनका। हाँ, हो सकता है नॉलेज बुक्स एंड गिविंग, नॉलेज, नॉलेज गिविंग, नॉलेज एक्वायरिंग, उसका भी हो सकता है। टीचर तो कोई। बड़ा इनकम में जुपिटर का हाथ दिख रहा है। हाँ सर, 2nd, 6th एंड 10th तीनों में इफेक्ट है हाँ। जुपिटर का। और वो जुपिटर का religious 3rd teacher, में भी आ रहा है। रिलीजियस वो टीचर। हाँ लेखक, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शायद वो लेखक भी हो सकते हैं। He might be a writer also who could have published books. हाँ, क्योंकि जुपिटर का इफेक्ट तीनों में है, हाँ सोर्स ऑफ इनकम में, 6th में एंड 10th में। हाँ, और यूरेनस का भी दिख रहा है 2nd हाउस में। एंड 4th में भी है जुपिटर। हाँ, और ज्यादा ये होगा, मार्क्सिज्म मतलब aggression, yes. Madam, also Sun is also there in the partial aspect in the 11th, where again networking is impacted. Yes, yes, yes. तो फेम तो मिला है, नेटवर्किंग भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड नेटवर्किंग लग रही है, और फेम भी दे रही है इनको। पॉलिटिकल और कमांडिंग या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और सैटर्न का भी पार्शियल एस्पेक्ट आ रहा है इसमें। हाँ, तो जो कुछ भी मिला है इनको अपने लॉजिक से, और राहु का भी पार्शियल एस्पेक्ट आ रहा है इसमें। तो जुपिटर है, मरकरी है, और प्लूटो, सन, सभी कुछ है। सन पार्शियल है, सैटर्न पार्शियल है इसके अंदर। तो जो ओवरऑल है वो यही चीज समझ में आ रही है कि जो भी इनकी नेटवर्किंग रही है वो मतलब इनकी हार्ड वर्क से और इनकी डिटर्मिनेशन से, इसकी वजह से इन्होंने एस्टैब्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग रही और होगी। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग की है। अश्विनी जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, मेरा तो लेवल 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू
connect the dots here कि पिछले recordings में क्या क्या सुना था, and just trying to do a bit of association. That's it. Summer For and okay, sir, no issue. Summer Madam, and Julie. Madam, Pluto being combusted by sun, उसका क्या अच्छा, relevance है हमने इसमें? ये चीज तो हमने नोटिस ही नहीं की है, कंबस्ट है कि नहीं। Combust है Pluto? नहीं सर, प्लूटो कंबस्ट नहीं है, रेट्रोग्रेड है। नहीं कंबस्ट है ना, 2 ही डिग्री का तो फर्क है। 27 है और सन हाँ हाँ कंबस्ट हाँ है। हाँ, प्लूटो कंबस्ट है। और conjunction देखेगा तो there are about 7 pairs of conjunction. हाँ जी, मरकरी भी कंबस्ट है। Mercury combust है? मरकरी कंबस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है, क्योंकि 25 मरकरी कंबस्ट नहीं है, वो 7 है, वो 25 है, बहुत दूर है। Only 25 Pluto डिग्री is से बाहर है। बाहर है, बाहर। मरकरी कंबस्ट नहीं है। Mercury and Jupiter are conjunct. correct, but there are 7 pairs of conjunction: Rahu, Uranus, Jupiter, Pluto, Sun, Jupiter, Mercury, Jupiter, Pluto, Mercury, Sun, Yes, Mercury, Yes. Mercury and Ketu, all are Yes. Yes. conjunction. And Mars Yes, and sir. Neptune, they are also in conjunction. 7 pairs of conjunction. So Jupiter and Mercury are in conjunction in the 11th house. Mars and Neptune in the 12th house, where both of these are related to networking, you said. है ना? 11th and 12th. हाँ, जो मरकरी और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, वो देखो 11th हाउस में भी इफेक्ट डाल रहा है और 10th में भी डाल रहा है, दोनों में डाल रहा है, पार्शली है ना? कौन सा? मरकरी और जुपिटर? जुपिटर का, ये दोनों ही 7 और 11 दोनों में काफी, आता है। हाँ, ये थर्ड हाउस भी चेक करेंगे ना ये नेटवर्किंग के लिए। पार्शियल। तो यहाँ पर ना मून पार्शल दे रहा है, हाँ पार्शल इफेक्ट दे रहा है, राहु भी पार्शल दे रहा है और मार्स नहीं, राहु कंप्लीट है, राहु कंप्लीट है, पार्शियल नहीं है राहु। राहु कंप्लीट एस्पेक्ट है। हाँ, राहु कंप्लीट एस्पेक्ट है, ठीक है। वीनस का फिर पार्शियल है, मार्स जुपिटर का भी है। पार्शियल। This person might be walking very fast, legs might be giving a fast movement whenever he is walking, and this man is having lot of this man has lot having a ability to learn whole life. He is learning and teaching and preaching to the people, and he may be having a sort of knowledge of occult. He must always having a desire to read occult sciences or some higher studies because of Ketu. And same thing is believing to others. Lot of followers will be there for this person, and this man must be having some status in government also, or a very good status in the society, and he is well connected to the abroad because of नेचुरल, इसका जो नेचुरल स्ट्रेंथ है जो एनी है वो अपने 12 भाव में है। और इसके साथ में क्या है कि ये कोई भी व्यक्ति वैसे इसने ऑलवेज ही हैज गिविंग नॉलेज टू द पीपल, अटेनिंग द नॉलेज एंड गिविंग द नॉलेज आल्सो, एंड ही इज हैविंग लॉट ऑफ followers also, and he is a good speaker, and he is a good knowledge of Adhyatma because of Jupiter role is everywhere. And how ऐसा हो सकता है that he will be both in and out of India regularly? हम उसको ना कंट्री वाइज ऐसे बोल सकते हैं कि अब्रॉड, नॉट इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कौन सी कंट्री का है। हाँ जी सर, अश्विनी जी। Ma'am, first time, so maybe a wrong question, but ये profiles बन के आते हैं, is it necessarily of people who are in India? उस हिसाब से ही discussion होता कहीं है? पर भी हो सकते हैं सर, कहीं पर भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि आप लोग स्पेसिफिकली इंडिया एंड अब्रॉड बात नहीं, कर वो रहे थे, सर का so क्वेश्चन था, इसलिए सर ने क्वेश्चन जो पुट अप किया था ना,
वो क्वेश्चन के लिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज सर हैड आस्क्ड कि इनका प्रोफेशन कहाँ रहा होगा, बेसिकली इंडिया में के अब्रॉड, तो इसलिए वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, नॉट बिकॉज दिस क्वेश्चन। नेपच्यून इन 12th मतलब इट विल मेंटेन द हाउस रिजल्ट, वो फॉरेन हाउस होता है 12th हाउस, तो डेफिनेटली फॉरेन से इनका कनेक्शन रहेगा। नेचुरल स्ट्रेंथ रही होगी, नेपच्यून गिव्स यू द नेचुरल स्ट्रेंथ ना, तो नेचुरल स्ट्रेंथ इनकी जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन आना जाना उस टाइप की, या हॉस्पिटैलिटी भी है उसका, मेडिसिन भी है उसका, तो मेडिसिन से भी रिलेटेड हो सकता है कि उनकी फॉरेन ट्रिप्स या मेडिसिन से रिलेटेड चीजों के लिए फॉरेन रहे हो या फॉरेन जाते रहे हो, है ना, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेडिसिन जो है 12th हाउस में मेडिसिन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। 12th is also international travel and Neptune present there, it will import take it export to peak. एक पॉइंट और समझ में आया, नेपच्यून का फर्स्ट हाउस में पार्शियल इफेक्ट है, जहाँ राहु का पूरा इफेक्ट है, और राहु और नेपच्यून का कहाँ से फर्स्ट हाउस में पार्शियल इफेक्ट है डियर? नेपच्यून 10 डिग्री है ना, कहाँ है फर्स्ट हाउस में नेपच्यून का? 1057 है ना। हाँ, तो 10 और 12 के 10 और 20 के बीच हो गया ना, तो कॉन्फिडेंट एनर्जी हो। आई एम और सॉरी, अगर होता तो 11th में होता डियर, फर्स्ट में नहीं। यस 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 यस, नहीं वो तो कॉन्फिडेंट एनर्जी में ही हो गया ना नेपच्यून। यस यस यस, वो कॉन्फिडेंट हो गया, माय मिस्टेक। What were the other questions, ma'am? I'm sorry, I missed the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल फीचर, फेशियल फीचर्स, हमें ये बताना कि उसका आउटलुक कैसे है। सेकंड, उनका प्रोफेशन हमें बताना है। थर्ड, हमें सोर्स ऑफ इनकम्स बतानी है। और फोर्थ, हमें बताना है प्रोफेशनल नेटवर्क, और ये बताना है कि जो पर्सन है वो अपनी कंट्री में ही अपना प्रोफेशन कर रहा है या आउट ऑफ द एट द फॉरेन प्लेसेस भी कर रहा है। ये 4-5 क्वेश्चन हमें बताना। ये 12th house is also of prison, he may be gone to prison, possible. No, just हाँ, फॉर द डेयरिंग, मार्स भी है उधर, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है, मार्स भी है वहाँ। और नेल्सन मरकरी मंडेला फर्स्ट हाउस में मरकरी है ना, और केतु भी है, तो ये हो सकता है। जुपिटर का पार्शियल एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस में होने से पेट थोड़ा बड़ा हो सकता है, द स्टमक पार्ट कैन बी। हाइट के हिसाब से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए इनकी, मीडियम हाइट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ना लंबा है ये इंसान, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मीडियम हिसाब से बोल रही है तो मुझे आइडिया मीडियम नहीं हाइट मिला। का होना चाहिए, ज्यादा टॉल नहीं होना चाहिए। So have we come to a conclusion on his likely profession? Something related to administration, teaching and communication, ये तीन पॉइंट्स तो निकल के आ रहे हैं। मेजरली कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग और पैसा, मतलब बेसिकली टीचिंग से कमाया हो ऐसा दिख रहा है कि पैसा कमाने में ये एक रोल, टीचिंग काफी बड़ी, क्योंकि सभी घर उसमें हाउसेज में वही दिख रहा है। तो वीनस भी है ना 10th हाउस में? हाँ जी, हाँ वीनस है, पर मरकरी का हाउस देखो, मरकरी की राशि है ना वहां पर। हाँ, जुपिटर का पार्शल, जुपिटर पार्शली है, मरकरी भी पार्शली है, सैटर्न का पार्शल इफेक्ट है। तो इस इंसान ने जो कुछ भी बनाया होगा वेरी हार्ड वर्क से बनाया होगा। According to Pluto only. That is in Gemini, no? Hello? Yes, yes. हाँ, जेमिनी में है। हाँ. No, suddenly all of you became silent. No, silent. Start speaking something. Whatever you understand. No, that's what I'm asking. That one. रिलीजियस लेडी, मदर से थोड़ी सी खटपट टाइप का रहा होगा। नहीं नहीं, ही मस्ट हैव बीन सब्सर्विएंट टू मदर, बहुत सेवा की होगी अपनी मम्मा की। मदर रिलीजियस टाइप की भी रही। So if you see that
Ketu thing is there with spouse, mother and child. All are Because aspected by Ketu. क्योंकि एक्चुअली क्या है, इनकी उसमें जो है ना, शनि और मून दोनों के दोनों जो है वो शत्रु, अति शत्रु। तो इसलिए क्योंकि शनि मदर के भाव में, मून वाले उसमें बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो लीव ब्रेक रूम आ रहा है, तो हु विल स्पीक? ममता जी, यू विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अस, है ना? आई मैं स्पीक, या नो प्रॉब्लम, बल्कि आप ही बोलिए ना, आपने काफी सारे पॉइंट निकाले, तो नो प्रॉब्लम, आप बताइए, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। कर दे लीव? कर देते हैं, हाँ जी, ठीक है। अजान में। Okay, I am back, and those who did not indulge into my temptation, congratulations. थैंक यू सर। SALSA astrologer. सर, Right? जब तक आपने कहा नहीं तब तक हमने किया नहीं। That was my Rahugiri. Right? सर हमको भी I wanted to see who is going to indulge into name guessing and who is going to not indulge into name guessing. सर, नॉट फेयर। आपने कहा था कि ब्रेक रूम में नहीं करनी है डिस्कशन, हमने नहीं की। Okay, very good. So welcome back everyone. So this is a very interesting chart. Okay, one interesting fact about this person I can tell you is this person had 2 sons and one more child this person adopted. Okay, so where can you get this indication of adoption of child? Anybody? What do you think? Which planet or which planetary combination or which position, right, is indicating adoption of a child? Mercury, Jupiter. Explain the logic also, no? So Mercury is child, मतलब child prince, we, Okay. and वो Jupiter is 11th हाउस में है जो आपका Sir, actually Jupiter has adopted Mercury, who is not his own child, is an illegitimate child which is born out of moon and his wife Tara. Okay. So these two together being having its aspect on the children house, and which is also the house of a Saturn. Saturn means giving justice and doing the right dharma, karma, believer of karma. So he has accepted his child, Okay. who is a illegitimate child. Okay. Anybody else? Anybody else? I think entitlement house और ये combination से कुछ हो सकता है, but I can be wrong, sir. Please enlighten us. See, when it comes to adoption of a child, now adoption of a child is a very peculiar event. It does not happen in everybody's life. Okay? And not everybody is okay with it also, right? Many people are okay with it, many people are not okay with it also. Hai na? So whenever such kind of a situation happens, whenever there is adoption of child, you can be somewhat absolutely sure a lot of spiritual energies are at work. Okay? So some spiritual connection you need to see. And in this case, we have Ketu aspecting the 5th house. Yes. Right? Abhi Ketu aspecting the 5th house doesn't always mean there will be child adoption. But it definitely means that you will get in touch with a spiritual child. Right? A child who has a spiritual connection with you or who has a past life connection with you. Right? That is definitely possible. Because Ketu is all about spiritual energies. See, Ketu के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, and you can note it down also. We say Ketu is detachment, right? But detachment from what? Detachment from materialistic energies.
right? Ketu also means super duper attachment with spiritual energies. Exactly the opposite is Rahu. Rahu means what? Rahu means attachment to materialistic energies, but that also means super duper detachment from spiritual energies. Right? So you have to remember this particular point. Okay. So in this case, Ketu is aspecting from the first house, right? It is aspecting the fifth house. It is aspecting the seventh house. It is aspecting the ninth house also, right? So in this case, fifth house, house of children. And another situation supports this, right? We have Saturn's Rashi coming in the fifth house. Yes. राइट अभी सैटर्न की राशि जब फिफ्थ हाउस में आ गई तभी क्या होगा बच्चों के बारे में ही इज वेरी जीरो ईगो राइट वेरी लेस egoistic he could be very caring he could be very disciplined about children very hard working about children right और बच्चों की ओवरऑल सेवा करनी है बच्चे पसंद भी होंगे शायद राइट ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ रहा है इन द फिफ्थ हाउस मरकरी का भी है right Jupiter's aspect in the fifth house means what something related to dharma has to happen in the fifth house right some righteous action this person needs to take right and because of Saturn's rashi there right he also desires to do these things he also he or she whoever it is right this person also wants to and is okay with it राइट अगर यहाँ पे दूसरी कोई राशि होती से फॉर एग्जांपल से सन्स राशि वुड हैव बीन हियर राइट फिफ्थ राशि वुड हैव बीन हियर राइट सो टिपिकली और अगर सन का मूड अच्छा होता टिपिकली व्हाट वुड हैव बीन द डिजायर्स देन नहीं मेरा खून चाहिए मेरा बेटा चाहिए बट सर सन भी तो यहाँ पर पार्शियली एस्पेक्ट कर रहा है एस्पेक्ट कर रहा है पार्शियली एस्पेक्ट कर रहा है अभी उसका मूड देखना पड़ेगा कितनी राइट वी आर टॉकिंग ऑफ द राशि Understood. So, because see, desire has to be there for something to take place in life, right? And if something is taking place in life, then you need to check with the desires or not whether this person wanted this thing in life or did not want this thing in his or her life. So, यहाँ पे adoption definitely this person is okay with it because of the Saturn's राशि that is coming. नहीं होंगे सर जैसे इसके अपने नहीं होंगे तो ये हमें केतु एंड सैटर्न से पता लग रहा है कि इसके अपने नहीं होंगे नहीं ऐसे नहीं बोल रहे सन है जुपिटर है तो अपने भी होंगे अपने भी होंगे और कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में वो भी होंगे राइट लेकिन बच्चे ओवरऑल he is absolutely okay with it कि अब मेरे होंगे या किसी और के होंगे I am okay with it right उसमें से एक बेटा शायद he found some spiritual connection I think right and ended up adopting that right जैसे मैंने कहा हमेशा कहा कि पहले भी कहा कि it need not be adoption all the time right it can be कोई बच्चा आपके लाइफ में ऐसे आ जाता है right which is a spiritual connection हो सकता है पिछले जन्म का बच्चा है आपका right and there is some pending karmas pending some spiritual energies need to be completed right that is why this person has come in your life again ऐसे भी हो सकता है connections correct soul connection कुछ हो सकता है and so on and so on right so this is one thing I think you should remember and you should kind of understand all right second interesting thing is the Rahu Uranus connection which is there correct राहु यूरेनस कनेक्शन अभी तक हमने काफी बार राहु नेपच्यून कनेक्शन स्टडी किया है हमारे सरस मीटिंग्स में राइट this can be the first chart I think we are getting a Rahu Uranus connection तो राहु क्या करता है राहु brings attachment and Uranus brings new creation right so this is attachment to new creations now in which house is this happening this is happening in the seventh house also
And but since Uranus is also there in the 8th house also partially, so this is happening in the 8th house also. Are you understanding this? Right? मीनिंग क्या होगा सर? सर 8th में कहाँ है सर? 7th में ही रहेगा राहु. यूरेनस देखो ना. यूरेनस है लेकिन यूरेनस यूरेनस है ना. हाँ यूरेनस 8 में, राहु तो यूरेनस 6 है तो 8th हाउस में भी है सर. Degree. राइट. तो कंजंक्शन वो तो लेकर जाएगा ना, यूरेनस कंजंक्शन को भी लेकर जाएगा ना 8th हाउस में. मतलब यूरेनस के साथ जुड़ गई ना राहु की एनर्जी. ओके. राइट. यूरेनस के साथ राहु की एनर्जी जुड़ गई, फिर वो 8th हाउस में भी काम कर रही है और 7th हाउस में काम कर रही है. राइट. Now 7th house is also house of partnerships. Right. 7th house is house of intimacy also. 7th house is house of business partnerships also. Right. So all of these things there is a lot of magical energy there. Right. And at the same time, the same energy is carried forward in the 8th house also. So you have to keep this point in your mind. Okay. Keep this point in mind. सर 8th हाउस में इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? अभी यूरेनस आ जाता है 8th हाउस में, हो सकता है नया कुछ बना दिया होगा, इंश्योरेंस पे हो सकता है. राइट. फिर एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, न्यूमरोलॉजी में हो सकता है, अकल्ट मैजिकल साइंसेस में हो सकता है. दैट इज आल्सो पॉसिबल. राइट. एंड मे बी सम न्यू क्रिएशन और न्यू थिंग. राइट. ओके. फिर उन चीजों में कुछ तो नया करने की हमेशा से कुछ अटैचमेंट रही होगी. राइट. हमेशा से कुछ ना कुछ नया. ओके. नागेश सर ने पॉइंट आउट किया था ये कंजक्शन 3-4 है. राइट. नागेंद्र सर. करेक्ट. यस. Okay. So remember these points. Whatever we are discussing now, remember these points, because this is building the personality of the person. This is building the character of the person. Right. Okay. फिर राहु यूरेनस का एस्पेक्ट 2nd हाउस में भी जाएगा. राइट. ओके. और okay, interesting. Some breakout room में मैंने सुना कि you said that this person must have written or communicated a lot of things. तो किसने बोला था ये चीज? और can someone explain that? How did you come to that conclusion? मैंने बोला था वो 2nd हाउस राइटिंग हाउस है, 3rd हाउस भी राइटिंग हाउस है. तो उधर जुपिटर का बहुत जगह पे इम्पैक्ट कर रहा है जुपिटर. राइट. तो उसको लेके और इधर 10th हाउस में भी जुपिटर पार्शियली बैठा है. तो उसको लेके बोला था कि उसका बहुत सारा पब्लिकेशन या लेखक हो सकते हैं. ओके. ओके. एक्सीलेंट. सर मर्क्यूरी जो है वो ये है, एक तो लगन है, एक्सेंडेंट है मर्क्यूरी, तो वो भी कम्युनिकेशंस तो उसका एक मेन सोर्स है ही है. प्लस उसका मर्क्यूरी का पार्शियल एस्पेक्ट 10th हाउस में आता है, तो मतलब उसके प्रोफेशन से भी मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का लेना देना हो सकता है. एंड 10th हाउस में सर गेम्स भी मर्क्यूरी उसमें है, मर्क्यूरी 11th हाउस में है, तो गेम्स वाला भी वही है. जी. सर मैं कह रही थी कि 3 नंबर की राशि भी है 10th हाउस में, तो वो भी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ लॉजिक्स ये दिखा रहे हैं. करेक्ट. 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 ओके. और सर उनका जो 1st हाउस है उसमें भी मरकरी की राशि है, जो कि ये बता रही है कि he is good in communication skills. Correct. And all of this is supported by his own desire for himself also. For example, आप 1st हाउस में कौन सी राशि है? 6th राशि. राइट. सो इनको भी खुद को क्या बनना है? नॉलेजेबल पर्सन बनना है, गुड कम्युनिकेटर बनना है. राइट. हो सकता है अकल्ट में जाना है. राइट. बिकॉज मर्क्यूरी इज दैट ऑल्सो ना. राइट. या फिर साइंटिस्ट बनना है. स्पिरिचुअल साइंसेस आ गया. राइट. या फिर साइंटिस्ट बनना है, या फिर मैथमेटिशियन बनना है. राइट. लेकिन केतु आ गए वहां पे 1st हाउस में, तो केतु क्या बोल रहे हैं? चलो ये सब बनो, लेकिन स्पिरिचुअल एरिया में बन जाओ. yes.
right? That is what Ketu is telling you there, Yes, 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 yes. right? फिर यूरेनस भी सपोर्ट कर रहा है. यूरेनस क्या बोलेगा, चलो स्पिरिचुअल इसमें करो, कोई टेंशन नहीं है, we will create something new, we will create some new, right? So that is what Uranus is telling you to do that in the first house. Understood, right? Okay. Another thing to note is Neptune is in the 12th house, aspecting 6th house. And Saturn is also aspecting the 6th house. Correct? Yes. Jupiter is aspecting the 6th house. I think Jupiter, partially Jupiter is aspecting the 6th house. Right? Okay. Who else is aspecting? Mars is aspecting the 6th house. Correct? Okay. मतलब competition तो definitely हुई होगी, right? But because of Neptune, this person might actually love competition, right? And competition brings out the best out of this person because competing becomes his natural strength or her natural strength, right? Wherever Neptune is there. He might be a disciplined man क्योंकि सैटर्न की राशि और सैटर्न का ही इसके अंदर पार्शियल Right. आस्पेक्ट. और ऊपर से कंपटीशन को इनका देखने का क्या नजरिया है, व्हाट डज ही थिंक ऑफ कंपटीशन, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम कंपटीशन, ऑल पैटर्न वाले एक्सपेक्टेशंस आर देयर, राइट? तो ये क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कर लो कंपटीशन मेरे से, राइट? नो टेंशन ऑफ इट एट ऑल, राइट? आई विल स्टे हम्बल, I will stay, nice with all of you. I will not let my ego go, up and all of those things, right? Okay. So that is what. And मार्स भी तो है वहाँ पे. मार्स की एनर्जी भी है सर. मार्स की एनर्जी है, वो मानेगा नहीं इजीली. विन करेगा. मार्स रिजल्ट वो नहीं करेगा. लेकिन थॉट प्रोसेस 11 वाली है ना, सैटर्न वाली है. थॉट प्रोसेस तो सैटर्न वाली है कि नहीं? आएगा, मार्स भी आएगा. मार्स मतलब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मार्स की वजह से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली आए होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? Okay, but this becomes a strength area, not only 6th house, right? Even the 12th house also becomes natural strength area, right? Because of Neptune. Okay, so this is another thing to note. और इनका इनकम भी देखो, 6th हाउस वाला इनकम क्या बोलता है, कंपटीशन को, मतलब कंपटीशन से आने वाला इनकम. और नेपच्यून भी आ रहा है, जुपिटर भी आ रहा है, राइट? मार्स भी आ रहा है. तो हो सकता है कि इन्होंने अपने सारे कंपटीशन को इतना पीछे छोड़ दिया होगा, राइट? जिसके वजह से ऑटोमेटिकली दिस पर्सन बिकेम फेमस, ऑटोमेटिकली पीपल ऑफर्ड हिम मनी और व्हाटएवर इट इज, राइट? सो 12th house and 6th house also become very very important in understanding this person. ठीक है? ओके. एक सवाल मैंने नेटवर्क का पूछा था, राइट? तो नेटवर्क टिपिकली वी कैन लुक एट इट फ्रॉम द 11th house, right? But it's not only the 11th house we can look for network from, right? Network you can look from the Mercury also. Why Mercury for network? Because Mercury prince hai, right? So whenever Mercury itself sits in the 11th house, no, you can expect the person to have a very good network. This is another thing to note down. क्योंकि क्या करता है प्रिंस, क्या करता है प्रिंस? लोगों से जुड़ना चाहता है, राइट? लोगों तक पहुंचना चाहता है, लोगों से बातें करना चाहता है, लॉजिकल बातें करना चाहता है, राइट? तो ये जो है ना मर्क्यूरी यहाँ यहीं पे बैठा है, नेटवर्क वाले घर में ही बैठा है. आपका भी मर्क्यूरी आप देख लेना कहाँ पे है, वहां पे आपका नेटवर्क हो सकता है, राइट? जैसा मेरा माय मर्क्यूरी इज इन द 6th हाउस. मेरे दुश्मनों का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग. Understood, no? Right? So you can also check this fact. Wherever Mercury is, no, that is your network. If Mercury comes in the 1st house, right, you are only network with yourself only. ज़्यादा बाहर नहीं जाओगे. Right? But you have to check the 11th house also, not only Mercury. Check the 11th house also. Okay?
Say someone has Mercury in the 12th house. This person can have maybe international connections or connections, lot of connections with doctors, lot of connections with hospitals, or so on and so on. So Mercury is where you will be very diplomatic. Right? That is why you will have a lot of connections there. Okay. So in this case, networking with gurus, Jupiter, Mercury with Guru. Okay. तो मर्क्यूरी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था शायद पहले आप लोगों ने. Right? So wherever Mercury is, a combination of many, I think many gurus came in his life and he has a good connection with them. right, correct. Mercury in Jupiter सेवेंथ में मर्क्यूरी कहाँ नेटवर्किंग करे? होगी ना नेटवर्किंग गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के साथ. मेरा ही है सेवेंथ में. Right? मतलब शायद आपको भी नहीं मालूम रहेगा, बट पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू और दैट पर्सन, है कि नहीं? बट यू आर ओके विद देम, यू आर डिप्लोमेटिक विद देम, यू कीप टॉकिंग विद देम, है कि नहीं? सो दैट बिकम्स योर नेटवर्क. अंडरस्टूड ना? और मर्क्यूरी और मार्स साथ में आ गए तो हो गया 7th हाउस में. फिर सर आप देखो इनके 11th हाउस में मून की राशि है और मरकरी और जुपिटर दोनों बैठे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इनका वो another thing to note is Mercury and Jupiter are in conjunction as well. हाँ जी. है ना, in the 11th house. Logic with brain. And you have partially Sun also coming in the 11th house. So this person can have a lot of network with authoritative people. People in authority. हो सकता है politicians, government people. सर ये पॉइंट ममता जी ने बताया था हमारे इसमें. अच्छा, okay, very good. Right, and then anybody else is having an impact on the 11th house. So, but then Mercury and Jupiter have become neutral, is it? Neutral. Saturn's partial aspect is there. True. Rahu's aspect is there. Saturn's partial aspect. Rahu's aspect is also there. Pluto is also present. Pluto sitting there Saturn partially. का भी partial aspect है. Now this is also very interesting. Rahu's aspect coming in the 11th house. Right? That is also very interesting thing to note. Where Sun is there, where Mercury is there, where Jupiter is there. So probably only for networking reasons, this person might have wrote a lot of things. Right? Or this person might have taught a lot of things. सर सैटर्न का भी इसमें partial aspect आ रहा है. Okay. Right. So Saturn is giving that seva wala bhav also while networking, but at the same time Rahu is also giving the attachment wala bhav ki nahi, he wants to do all of these things. Check the Rashi which is coming. Another very interesting point for this person, a very interesting point for this person. I am also reading this chart in front of you only, okay? Right? So very interesting point is 11th house you have 4th Rashi. मतलब ये राजाओं का रानी बनना चाहते हैं, राइट? अथॉरिटी पीपल पे जो भी लोग हैं उनकी रानी बनना चाहते हैं. अभी रानी बनना मतलब क्या? उनका राइट हैंड बनना चाहते हैं, राइट? उनको समझना चाहते हैं, उनकी साइकोलॉजी देखना चाहते हैं, या साइकोलॉजिकली हेल्प करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं. Is everybody understanding this? This is another point to be noted. Or could it be kingmaker, sir? Yes, kingmaker. Exactly. He wants to make things. He wants to make gurus. He wants to create people, right, who are at a higher level, higher position. He or she, whoever this is. Right. So that is why now considering Rashis as your dreams, your desires, your expectations, right, is a mind-blowing fact. Okay, you have to, consider that fact really well. Now, considering the Vedic wala dispositor theory, if you check, the 4th Rashi Lord is sitting in the 9th house. Yes, both are exalted. Right? So, that is also a very interesting connection. Right? And this person definitely has a network which has something to do with
maybe teaching, Hmm. maybe being a guru, or maybe about psychology or writing something, or religious things and the right things and spiritual things and all of these things. We discussed all these things, sir. सर इनके सभी अर्थ हाउस में जुपिटर है. Right, Sabhi, that was the next point I was going to come to. Right, all Artha houses has Jupiter. Yes. Means income has come through some religious Teaching. thing or a dharmic thing, Teaching. or by teaching, or by Teaching. or because of children or something like that. Right? Okay. He fits into the profile of Chanakya. Okay. So now I'm going to give you the name of this person after this entire discussion. Right? And then you have to tell me. Right? You can immediately open up Google also if you want to, just to check few things and confirm with it or not. And this person is a very well-known, very renowned person. This person predicted the end of COVID. This person predicted, some few people becoming the prime minister of our country. Right, this person also predicted really correctly some international events also that were going to happen and all of these things. And this person died very recently in 2020. And this person is one person we should all study, right, as SALSA astrologers. And this person is Bejan Daruwalla. Bejan Daruwalla. सर इनके जो फिजिकल अपीयरेंस वाला रह गया अपना डिस्कशन. Spiritual appearance, Ketu in the first house. वो अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते बिल्कुल. मैंने कहा था मीडियम हाइट एंड ही इज किसी ने बोला था हमारे ग्रुप में कि जुपिटर इज एस्पेक्टिंग द 4th हाउस. दैट पर्सन माइट हैव अ बल्जी स्टमक. तो वो भी करेक्ट आ गया इनके उसमें. Correct. Very true. 80% of this we have discussed, sir. Very good. मैंने बोला था स्पिरिचुअल स्पीकर होना चाहिए ये बंदा, बट कुछ वैसा ही हो गया काइंड ऑफ दैट. This person was addicted to publishing this predictions. तो हर साल ना उनकी एक किताब आती थी, prediction for 2018, prediction for 2019, prediction for 2017 ना. हर एक साल एक किताब आ जाती थी पूरे साल की प्रेडिक्शन की. Right, and he wrote other books also, right? So many books. So he was a writer, author also, right? For sure. So, feel free to go ahead and do some little bit of research into this. Right? Find as many details as possible. Try to relate with the chart. Sir, I was going somewhere आसाराम की तरफ था मेरा इंक्लिनेशन. बट जैसे डिस्कशन हुआ था कि जो इनका 12th हाउस है, 12th हाउस में मार्स है और नेपच्यून है और सन की राशि है. तो हमें था कि मेरे को पर्सनली ये था कि आसाराम के लिए से रिलेटेड है. और साथ में जैसे 7th हाउस में राहु और यूरेनस हैं दोनों, तो मल्टीपल पार्टनर्स या इस तरह से हो सकता था. और जेल भी गए हो सकते हैं. पर्सनल लाइफ की ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कहीं, क्योंकि एक्चुअली यूरेनस और राहु इकट्ठे होने से ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना कि उनकी कोई ऐसी अजीब सी शादी हो, प्रोबेबली मैरिड टू वन ऑफ हिज रिलेटिव्स और समथिंग लाइक दैट. No, sir, we have to check it out. हाँ, वो पता नहीं है, but find it out. ऐसे भी हो सकता है कैसे शादी हो गई, right? And if you research this, उनकी wife जो थी, she was also tarot reader, right? She was also into the same field. And I think they had a nice married life also, I think. Sir, regarding the adopted child and all, that's reflected. I just wanted to know. Yeah. So I told you, no, Ketu's aspect is coming in the 5th house, no? No, he has an adopted child, this gentleman?
Yes. Sir, जैसे केतु is aspecting the 5th house or केतु in the 5th house, it gives like multiple attempts of children also. Or Yes, yes, that is also possible, right? Multiple attempts of children, or detachment from your own children, but attachment to spiritual children, right? ऐसे भी हो सकता है. मतलब if Ketu comes in the 5th house, no, अपना खुद का बच्चा है ना, आप उनको शायद कुछ नहीं दोगे, right? No property, go, you get lost, right? But some spiritual son comes, no, or spiritual daughter comes, okay, you will be like, oh, come dear, everything you can have, right? That is also possible, right? When Ketu is there in the 5th house, and other things also need to, no? But sir, here I want to speak something about the adopted child, you know. Huh. This is connected with the house number 8 and Rahu, which is discussing छिपाता है उन चीजों को, और 8वां भाव भी छिपाए हुआ है. This child may be his child, but he might be hiding from the society. We have no idea, sir. We have no idea. We But पर 8th हाउस में तो कोई भी ऐसा वो है नहीं. right. यूरेनस और राहु दोनों की एनर्जी 8th हाउस में जा रही है. Right. तो वो जा रहे हैं 8th हाउस में, but 8th house has nothing to do with the नहीं, children. राहु की कहाँ जा रही है सर? खाली राहु वो नहीं जा रहा है, राहु नहीं जा रहे 8th की वजह से राहु बोल है रहे सर. यूरेनस को राहु की पावर बहुत मिल रही हैं. है, right? But I think he understood Rahu and Ketu very well, right? Because if you go to search for his details, you will not find personal life details much. जो हम सिखाते हैं ना राहु के क्लास में कि wherever Rahu is there and Rahu is aspecting, you have to maintain your secrets, right? You have to be very secretive, right? Okay. All right. So I hope you enjoyed today's session. Yes. So first of all, let us give our pranams to Bejan Daruwalla ji. Thank you so much for coming in our life today and helping us to understand astrology much better. What was your biggest takeaway? Let me know. Which was the point that you enjoyed the most? Adoption wala and Rahu Uranus wala and the combination of Jupiter impacting and publication wala connection. Excellent. Very good, Sangeeta ji. Who else would love to share? What is that one thing you will remember from this particular session? सर, जुपिटर ने किस तरीके से इनकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले किया है अलोंग विद मरकरी, और केतु का भी इफेक्ट किस तरीके से रहा है सारा ओवरऑल इनकी फिजिक पे और ओवरऑल लाइफ पे. तो ये दो चीजें ज्यादा हमने इसमें देखी हैं. सर, हमने इसमें ज्यादा ये चीज नहीं समझा कि एस्ट्रोलॉजी में ये कैसे आए या ये ऑकल्ट साइंस में कैसे आए, ये चीज नहीं समझ पाए. है ना, एक तो मर्क्यूरी है असेंडेंट, that is definitely there. So inclination towards logically understanding these things. So इन्होंने क्या किया था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, राइट, इन सारी चीजों का combination this person used to do. So Uranus is also there, right? So that is also indicating a lot. हो सकता है इनके इन planets के moods भी बहुत high होंगे. We will have to check, right? We have not checked as yet, right? And if you check the Vedic वाला dispositor theory, then आपके लग्नेश जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं, right? Which is the bhav of lot of success, lot of network, lot of sudden gain, sudden income, and all of those things, right? Or Neptune in the 12th house, okay? Because Neptune is also considered to be नटखट planet तो है ही, but it is also a magical planet, right? So Neptune coming in the 12th house is also a very profound indication that you have a lot of magic which is sitting in a house which is house of spirituality, moksha, and all of those things, right? Neptune come, but in whatever house it create a magic there. Right, correct. So spiritual energies automatically become very, very high in this particular case, all right? Or I think Pluto कहाँ पे है? We did not speak about it. But Pluto is in 10th house. is in 10th and house. 11th. Pluto is in 10th. From first day. Definitely, there must have been some transformation in the maybe earlier
some other profession and then came into this profession. Yes, सर sir. ये Yeah, हमने we डिस्कस discussed किया था about he might be a teacher somewhere अच्छा, और टीचिंग से ये एडमिनिस्ट्रेशन या इस उसमें आए हैं ये हमारे उसमें किस चीज डिस्कशन हुई है और इनके फादर भी इनके प्रोफेशन में बहुत बड़ा कोई रोल इन प्ले काफी बड़ा स्टार्ट किया है इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन में. okay. Sir, but Pluto is combust, no? Pluto is combust. yes Yes. so sun took that part na No problem. Even if जो it is transformation combust, even if it is combust, sun will definitely take the responsibility. Not only that, who knows? Even if it is combust, mood might be very high. सर प्लूटो की दूरी बहुत ज्यादा है, कम्बस्ट का बहुत कम असर पड़ेगा इसके ऊपर. हो सकता बट यहाँ पर डिग्री वाइज डिस्टेंस भी तो बहुत कम है. ठीक है. Okay. Anybody else wants to share what is that one thing you understood? Especially those who attended for the first time. This is your first SARAS meeting. एडॉप्शन वाला पॉइंट एकदम वो जैसे कि अपने बच्चों से डिटैचमेंट एंड देन अटैचमेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल चाइल्ड. Right. ये एक ही साथ में दोनों चीजें हो सकती हैं. हो सकती है, definitely हो सकती So Mercury in 11th will give a good connection network. है. Right. So first. Network connections. Correct. Right. You can remember that point also. क्या क्योंकि एनर्जीज मैच हो जाती है ना, हाउस और प्लैनेट की एनर्जीज एकदम से मैच हो जाती है. राइट. ओके, चलो. सो आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन. Sir, one small question. Yes, go ahead. You gave a situation where Ketu is aspecting the 5th house and it points out to a likely case of a adoption of perhaps a soul connection. Yeah. Now, this is regarding the parent. Now, suppose we got the, what you call, chart of a person who's an adopted kid, Okay. like Rajgopalchari maybe, or someone like that. I mean, Right. how is it, what you call, reflected in the chart? So it will reflect in the parents, no? This person will have a spiritual parent. Acha. Right. So maybe, you have some spiritual energies coming in the 4th house or the 10th house, or, these energies are aspecting the sun and the moon both together. सेकेंड हाउस पे भी होगा सर. Second Second house भी हो सकता है. फैमिली का. So you'll have to look at the parents now. Today we were looking at the child. Yeah. सर लेकिन ये तो बहुत कॉमन है. केतु इन फर्स्ट हाउस इज अ वेरी कॉमन अकरेंस इन मेनी कुंडली. 1 in 12. है ना. वेरी कॉमन. सो मतलब ये कि उसके अलावा 3-4 फैक्टर्स मिल रहे होंगे तभी ये चीज होगी. अभी यहाँ पे Jupiter is also confirming, no? Jupiter is also aspecting the 5th house. That also Jupiter is confirming, Saturn is confirming. Saturn की राशि आई है, so this person also, the desires are also there. Right. है ना? Because सारी एक चीजें मतलब एक ही चीज नहीं, 3-4 चीजें एक साथ होंगी तो ही वो. Correct. सर इसमें बड़ा रोल मरकरी का है. लगन में केतु मरकरी का वो इफेक्ट लेके बैठा है, मरकरी का एस्पेक्ट भी उधर आ रहा है इसमें जो, और मरकरी हिमसेल्फ इज ए चाइल्ड, तो आई थिंक मोस्ट इफेक्ट इज हैविंग, मरकरी इज हैविंग दिस इफेक्ट. एडॉप्शन के लिए क्या कह रहे हो सर आप? Chalo, anyways, I hope you enjoyed this session today. Okay, Yes, see you in the next one, next Sunday. Again, it is afternoon timing. Next Sir, Sunday. afternoon timing. आफ्टरनून बेटर है. So afternoon only. Next Sunday, we will meet again for a SARAS meeting. And tomorrow, that is 11th of September, we are starting the level 1 new batch. We are starting from tomorrow. All right. Okay. See you. Take care, everyone. सर हम भी अटेंड कर सकते हैं ना दोबारा से. Most welcome. All right. जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा ना. Very good. चलिए, थैंक यू सर. See you. Take care. Bye, everyone. Bye, sir. Bye. Bye.